I think just like 18 times before, Bahrain Grand Prix is not going to disappoint us. 5.4 किलोमीटर का सर्किट, 15 टर्न है इसके ऊपर, many fast, many slow and many medium corners. Medium corners and slow corners are what I think will win the race. That will help drivers bring up their race pace, their mechanical grips, their braking powers, their apexes, and the patience of the driver every time they go on the track for 57 laps altogether. This will be your grid, guys. On the front row, there will be Max Verstappen, Sergio Perez. Then on the second row, there will be Leclerc and Sainz, Alonso, Russell, Hamilton and Stroll. Then comes Ocon and Hulkenberg. On the 11th and 12th, there will be Norris and Bottas, Zhou and Tsunoda, Alonso and Sargent, Magnussen and Piastri, De Vries and Gasly. किसी भी रूल स्टैग्नेशन पीरियड की सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि लैप टाइम्स छोटे से छोटे होते रहते हैं एंड टीम का डिफरेंस कम से कम होता रहता है. वही हमको Q1 में देखने को मिला. सारी टीमें ऑलमोस्ट 1.2 सेकंड के डिफरेंस पे थी. इट वाज अमेजिंग टू सी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. ये खाली हमने फॉर्मूला E या F2 के अंदर देखा था, बट अब फॉर्मूला 1 में भी देखने मिल रहा है. दिल खुश हो गया. बात करते हैं मैक्स वर्स्टैपेन की पोल पोजीशन की. FP1 के अंदर चेको पेरेज, FP2 एंड FP3 के अंदर फर्नांडो अलोंसो, Q1 के अंदर कार्लोस साइंस एंड Q2 के अंदर शार्ल लेक्लेर्क के होने के बाद Q3 के अंदर मैक्स वर्स्टैपेन ने बाजी मार ली पोल पोजीशन लेके. शार्ल लेक्लेर्क ने जरूर एक टायर बचा लिया, पर उनका टायर डेग्रेडेशन इतना ज़्यादा है फरारी का कि वो एक टायर कंपाउंड भी ज़्यादा कुछ उनको हेल्प नहीं कर पाएगा. फरारी के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले रेडबुल के बारे में बात खत्म करते हैं. रेडबुल ने एक बहुत ही स्पेशल गाड़ी बनाई है. एड्रियन न्यूई एंड होल टीम ने एक बहुत ही स्पेशल गाड़ी बनाई है, जिसके कारण रेडबुल विल बी ऑन द फ्रंट ऑफ द ग्रिड. The downforce was amazing. The slow and medium corners were good, but the best part was the exit pace from the faster corners was absolutely blistering. Max Verstappen ने खुद ने बोला कि प्रैक्टिस के अंदर और क्वालिफाइंग 1 and 2 के अंदर he was not that happy that he was with the testing, but I'm sure they will be back on the longer run pace in the race. दे सेड दैट सिंगल लैप रनिंग के अंदर उतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी जो रेस पेस के अंदर है. भाई इससे अच्छी क्या होने वाली है, राम ही जाने. But anyways, coming back, Checo Perez will be on P2 and he is locked up with Max Verstappen, his teammate, on the front row. Checo Perez ने क्लियर कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि मैं कोई नंबर 2 ड्राइवर नहीं हूँ और मुझे हल्के में मत लेना, मैं वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप के कंटेंडर में से एक हूँ. अब जब फ्रंट लो लॉकअप हो गई है, विल Checo Perez pull out his elbows and fight Max Verstappen toe to toe? Let's see. It will be one of the most interesting things to see in the race tomorrow. Now let's talk about Ferrari. Q1 and Q2 was much better than Q3. शार्ल लेक्लेर्क का जो पहला रन था Q3 के अंदर वो भी इतना इंप्रेसिव नहीं था जितना हमको Q2 का दूसरा रन दिखा. बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द रेस पेस के अंदर शार्ल लेक्लेर्क, कार्लोस साइंस और फेडरिक वेसेट, टीम प्रिंसिपल के सुनने के बाद हमें तीनों के चेहरे पे टायर डेग्रेडेशन का भूत सवार देखा. टायर डेग्रेडेशन फॉर फरारी विल बी द ओनली एनिमी ऑफ द एंटायर सीजन. अगर वो उसको सॉल्व कर ले तो शायद मैक्स वर्स्टैपेन एंड रेडबुल को कंपीट कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू प्री क्वालिफाइंग स्ट्रैटेजी, शार्ल लेक्लेर्क एंड फेडरिक वेसेट ने एक टायर कंपाउंड बचा लिया है. उन्होंने ये सोचा था कि भाई टायर कंपाउंड अगर वेस्ट भी कर देंगे तब भी हम शायद रेडबुल को हरा नहीं पाएंगे. दैट्स व्हाई दे सेंट ओनली कार्लोस साइंस ऑन अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी एज शार्ल लेक्लेर्क, व्हिच वाज अ गुड मूव अकॉर्डिंग टू मी. बट एनीवेज, saving this new tire soft compound for the race, it will give them a 3 to 4 second race lead, which will be a good part for the first stint. The only thing what I think is Bahrain is a hot track, is a hot weather track. Tire degradation will be quite high in Bahrain. So anyways, we'll see multiple tire stints. सारी टीमें at least 2 पिट स्टॉप्स तो करने ही वाली हैं. बट उसके अलावा आई थिंक द ओनली वे फरारी कैन गेट अवे विद देयर हाई टायर डेग्रेडेशन, एटलीस्ट इन Bahrain, is when somebody will end up in the wall, and in between, whenever the tire degradation going down, if that incident happens, then only they will have an advantage over the other cars by pitting them into a safety car or even a virtual safety car. रेड फ्लैग में होता तो माशाअल्लाह. Plus, it will be very interesting to see inter-country fight between Carlos Sainz and Fernando Alonso. Carlos Sainz being on P4 and Fernando Alonso being on P5, it will be very interesting to see there. Ferrari ka tire degradation will be high, and Fernando Alonso and Aston Martin ka tire degradation is only higher than Red Bull, which is very, very less. And race pace is also as very similar or even higher than Ferrari. So I'm sure there's going to be a fight, definitely. At the end, Ferrari has a very less draggy car, also because of the engine and turbo, which is a thing of beauty. 350 की स्पीड और सेकंड में पकड़ लेती. That will also help Haas and Alfa Romeo for sure. Now let's talk about Mercedes. 8 साल के डोमिनेशन के बाद Mercedes को अब पता लग रहा है कि पहली क्वालिफाइंग में जाने के बाद अगर किसी लीडर से आप 0.6 सेकंड पीछे हैं, दैट इज अ ह्यूज गैप फॉर अ Mercedes टू अ Red Bull. लुइस हैमिल्टन के चेहरे पे अच्छी खासी उदासी एंड इम्पेशेंस दिखाई दिया, जिसके अंदर उन्होंने 1-2 दिन पहले के इंटरव्यू के अंदर शायद ये भी बोलिया कि वी नीड टू चेक आउट द होल स्ट्रैटेजी ऑल टुगेदर इफ द डिजाइन फिलोसफी इज राइट और रॉन्ग. टोटो वुल्फ ने पोस्ट क्वालिफाइंग सेशन के अंदर आके ये भी बोला कि भाई वी कांट लाइक रियली एकदम से कोई बड़े साइड पोर्ट लगा के गाड़ी ठीक नहीं हो जाएगी. वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन द कार, एंड इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे विल अंडरस्टैंड. इफ द टीम हैज टू रिवर्स द आइडियोलॉजी, चेंज द आइडिया,
they will do it in no time because these rules and regulations will be here for 2023 सीजन. अभी तो आने वाला है, अभी तो पहली क्वालिफाइंग हुई है, उसके बाद 24 और 25 के अंदर भी रहेंगे. सो दे नीड टू कट देयर लॉसेस एज सून एज पॉसिबल इन द वर्ड्स ऑफ विल बक्सटन. Now let's talk about the most progressive team of them all, Aston Martin. Aston Martin के बारे में बात करते हैं. They've created an amazing beast of a car. The mechanical grip and the braking power in the car is amazing. Slow speed corners and medium corners are great. The only problem might be will be the Mercedes engine that can't produce as much power as Ferrari and Red Bull powertrains engines. Now let's talk about Stroll as well. It's not a small beat that Stroll did a fantastic job just parachuting in. उनका अनफॉर्चुनेट बाइक इंसिडेंट के बाद उन्होंने टेस्टिंग मिस कर दी, पर उसके बाद FP1, FP2, FP3 के अंदर जितना अपना वो कंट्रोल कर सकते थे, जितना संभाल सकते थे, जितना बढ़िया कर सकते थे, उन्होंने करा. और Q3 के अंदर अपने टीममेट आई थिंक फर्नांडो अलोंसो P5 एंड स्ट्रोल इज P8. एनवेलपिंग द टू मर्सिडीज ड्राइवर इज अ फैंटास्टिक फीट. इट्स नॉट स्मॉल. पिछली बार P7 खत्म होने के बाद इस बार अगर वो P4 के कंटेंडर भी हैं इन WCC, इट विल बी अ बिग फीट फॉर एनी टीम, बट लुक्स लाइक दे आर डूइंग बेटर देन फरारी इन द रेस पेस. एंड मर्सिडीज को अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देंगे. प्लस उनका टायर डिग्रेडेशन इज ओनली कंपेरेबल टू रेड बुल, विच इज एन अमेजिंग थिंग. bahrain के अंदर इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क टू मेंटेन योर टायर्स बिकॉज इट्स 57 laps. It's going to be a very hot weather out there. The track's going to be very hot. Plus tire degradation is going to be really high. That's why we're going to see multiple pit stops by every team. At least 2 is what I can see, and maybe more because of any flags or difficult safety conditions. मुझे पूरी क्वालिफाइंग के अंदर निको हल्केनबर्ग का परफॉर्मेंस स्पेशली काफ़ी अच्छा लगा. पूरे सबैटिकल के बाद फ्रॉम Formula 1, a couple of here and there performances because of him being the super driver. I think he did a fantastic job. Q2 के अंदर अगर अपन उनकी बात करें तो 0.3 was the only adrift of Nico Hülkenberg from Max Verstappen. It was not a small feat when it comes to Haas. भाई हास के अंदर अगर वो इतनी अच्छी गाड़ी चला रहे हैं तो क्या ही करेंगे. आई थिंक ही इज जस्ट enjoying the whole drive. When he's back in Formula 1, he's enjoying, he's savoring every moment that he can. But it a fantastic job. Plus मैं एक लोगन सार्जन की तारीफ करना चाहता हूँ. लोगन सार्जन ने पूरी टेस्टिंग के अंदर कोई गलती नहीं करी, which is unlike for any rookie. इसके अंदर भी यहाँ पे क्वालिफाइंग के अंदर भी he finished P16, which is a commendable job, out ranking his other more impressive competition and more churched competition, for example Oscar Piastri or Nick De Vries, which was an amazing thing to see in the American driver. Gasly did pick up small penalty for overspeeding in the pit lane. He has this habit of doing this. I don't know why does he do it. 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की लिमिट थी, उन्होंने 80.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चला दी. उनकी गाड़ी का बैलेंस ऑफ होने के कारण गाड़ी इधर उधर फिसल रही थी, जिसके कारण गैसली ऑफ लिमिट चले गए. बट अगर वो ऑफ लिमिट नहीं भी जाते तभी वो Q2 में क्वालिफाई नहीं हो पाते. बट एनीवेज जब हमने देखा कि Q3 के अंदर ओकॉन के आने के बाद आई थिंक गाड़ी के अंदर पेस तो है, गैसली को अपनी पेस बढ़ानी पड़ेगी. ठीक है यार, 1-2 रेस देनी पड़ेगी भी किसी को भी अगर नई गाड़ी में नई टीम में आने के बाद. बट आई थिंक गैसली विल बी स्ट्रीमिंग थ्रू द बैक मार्कर्स एंड उनसे कोई ना कोई गलती ना हो जाए, इसका मैं प्रे करूंगा. बट एनीवेज ही हैज़ अ हैबिट ऑफ गेटिंग इनटू द सूप. उनके पास 10 पेनल्टी पॉइंट है, जिसका मतलब ये है कि अगर 2 पेनल्टी पॉइंट एक कोलिजन पे 2 पेनल्टी पॉइंट मिल जाते हैं, अगर वो ऐसा होता है इमोला की रेस के पहले, देन ही विल गेट अ 1 race ban. Anyways, Bahrain Grand Prix will be a spectacle to watch. A lot of things to see on the front of the grid. What will happen between these two Red Bull drivers? Will there be a tire degradation that big that Fernando Alonso can run over these Ferraris and go on the top? Will Ferrari end up fighting with Mercedes, or will they be outperformed by Mercedes? A lot of things to see in the middle of the grid as well and the last of the grid as well. What will happen to Nico Hülkenberg? Will he get some points like the Viking comeback that we saw with Kevin Magnussen last year in the Bahrain Grand Prix itself? A lot of things to see in the Bahrain Grand Prix. Let's see you guys in the watch along. I hope to see you there. It will be a fantastic race. Again, one of my favorites Grand Prix was the Bahrain Grand Prix was 2014, the duel in the desert. Check out that fight between Nico Rosberg and Lewis Hamilton while you prepare yourself for the Bahrain Grand Prix. Anyways, see you in the evening, guys. Take care. Bye-bye. Until the next time, please take care of yourself.